filling of elements, filling of elements in periods is done on the basis of ns n minus 2f n minus 1d np। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास फिलिंग करनी होगी, है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या करनी होगी, फिलिंग करनी होगी। ठीक है, तो और या फिर बेसिकली अगर आपको याद हो थोड़ा तो हम बता देते हैं आपको। when we were learning electronic communication, so using this हम लोगों ने एनएस, यू हैव सीन दिस चलो पिछले अबीर अलीना एंड अली, आप लोगों ने देखा ना ये चीज, एनएस एन माइनस 2 एफ एन माइनस 1 डी एन पी, आया ना बताएं, यस देखा है ना आपने। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 रखें वैल्यू, है ना, एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट पीरियड की बात करें, अभी लिखना नहीं है आप लोगों को, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s, ये क्या हो जाएगा -1f, ये क्या हो जाएगा 0d, और ये हो जाएगा 1p। ना ही -1f एग्जिस्ट करता, ना ही 0d, ना ही 1p, आपके पास सिर्फ क्या बचा 1s। और 1s में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 एलिमेंट, सिर्फ देखते जाइएगा, उसको आराम से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए n इज इक्वल टू 2, बताइए n इज इक्वल टू 2 में क्या क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, अलीना अबीर एंड अली, डोंट राइट नाउ, जी बताइए। n इज इक्वल टू 2, तो 2s, टू अरे एस बोलो भाई 2s, और ये क्या हो जाएगा, 1f 0f, f 2 - 2 0f, है ना, और फिर ये 1d 1d, और फिर ये 2p 2p। ध्यान रहे 0f भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1d भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मेक सेंस, ये सुनो प्लीज टेल मी। यस तो यहाँ पे आपके पास s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने एलिमेंट, 8 एलिमेंट्स, बात समझ में आ रही है, बोलो यस और नो, यस बोलिए n इज इक्वल टू 3, बोलते जाइए n इज इक्वल टू 3, बताइए 3s, बोलो भाई 3s, उसके बाद 1f बोलो 1f, उसके बाद 2d 2d, उसके बाद pp 3p। ना ही 1f एग्जिस्ट करता है, d भी एग्जिस्ट करता है आफ्टर 3, 3d से स्टार्ट होता है ना, d कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से, 1 कहाँ से स्टार्ट होता है s से, है ना, s कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, p कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, d कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से, 2d तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पे भी आपके पास कितने, s में 2 और p में 6, टोटल 8 एलिमेंट्स। अरे बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बताएं, अरे बोलो हाँ भाई। यस सर n इज यस इक्वल टू 4, बताइए n इज इक्वल टू 4, बोलो 4s 4s 2f 2f 3p 3d 4p 4p। 2f एग्जिस्ट नहीं करेगा, s में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोलो 2, डी में कितने, डी डी एग्जिस्ट करता है ना, डी में कितने बोलो, हाँ हाय, हाउ मेनी 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी देयर, 10, डी में 10, एंड इन पी हाउ मेनी, इन पी 6, 6 so a total of 18 elements will be there in the n is equal to 4। ठीक है, आगे चलते हैं, n is equal to 5, आप लोगों को बात समझ में आ गई, हाँ या ना बताएं, अब करें हाँ आराम से, सर यस यस ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया आपका पीरियड नंबर, ठीक है, यहाँ पे आएंगे उसके सब शेल, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 में कौन सा सबशेल 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, n इज इक्वल टू 2, 2s 2p, क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक, तो वो भी आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ले लो देखिए, यहाँ पे आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहले वाले में कितना होगा, पहले वाले में बस दो, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अच्छा, 8 में आपके पास ध्यान से देखिएगा, हीलियम वाला, हीलियम के नीचे कौन आ जाएगा, नियॉन, है ना, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, लिथियम से नियॉन, ये ग्रुप 1 चलता रहेगा, ये ग्रुप 18 चलता रहेगा लास्ट में, है ना, एन इज इक्वल टू सी, क्या आ जाएगा, सी एस भराएगा, सी एस भराएगा, और सिर्फ सी पी, सी डी होता है लेकिन सी डी यहाँ नहीं भराता है, 4 में भराता है ना। लिथियम के नीचे कौन आएगा बताओ, याद करोगा आपने,
लीना की तरफ से फरियाद, लिथियम के नीचे, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो भाई, टाइम नहीं है इतना। लिथियम के नीचे कौन आएगा? लीना करप कसफर, लीना की रब से फरियाद। लिटिल चिल्ड्रन वाला क्या तो याद किए थे ना आप लोग, लिटिल नॉटी किड्स। व्हाट डिड यू लर्न? अबीर, अलीना, अली, क्या याद किया आप लोगों ने? अरे भाई क्यों नहीं बोल रहे, बताओ, सब भूल गए। सोडियम से नियॉन के नीचे तो बता दो, व्हाट विल बी बिलो नियॉन? हीलियम, नियॉन, उसके बाद बोलो भाई। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन। हीलियम नियॉन, उसके बाद आर्गन, आर्गन 18। एटॉमिक नंबर भी लिख दे क्या? एटॉमिक नंबर भी लिख देता है, एटॉमिक नंबर लिख देते हैं ना। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 और 2। फिर 3 से 10। फिर उसके बाद क्या है बताओ? 3 से 10, 11 से 18। ठीक है, सब लिख दे रहे हैं। n = 4। 4 यानी कि आपके पास क्या क्या आएगा यहाँ पे? 4s, 3d एंड 4p, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे 18। कहाँ से? लीन, पोटेशियम से लेके क्रिप्टन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना। ये यहाँ अरे करो, लीनक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 19 से कहाँ तक बोलो? 19 कहाँ तक? 18 के बाद क्या था? 2, 10, 18। अरे रे 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 रे, 2, 10, 18, 36 नहीं, बोलो भाई। अरे ऐड कर दो ना, 18 + 18, 18 तक आर्गन, उसके बाद 18 एलिमेंट्स, 18 + 18, 36। ठीक है। n = 5, 5s, 4d एंड 5p। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18। कहाँ से कहाँ तक? लीनक, रब, रुबीडियम। उसके बाद ये यहाँ से करो, जेरोक्स, जेनॉन। जीरो। 37 के बाद बोलो, 37 से कहाँ तक आएगा? 2, 10, 2, 10, 18, 36, फोर। 54, 54, 56। वेरी गुड। 54 है ना, 54, 54, 86। n = 6। क्या हो जाएगा बताओ? 6s, 4s, फिर 5d, फिर 6d। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 32। एफ आ गया ना यहाँ पे, तो 14 और भर जाएंगे। 32। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? यहाँ पे आपके पास आएगा रुबीडियम, रुबीडियम से लीना तरफ तक, सीजियम लंदन। से रेडॉन, है ना। ठीक है, उसके बाद बताइए 55 से लेके कहाँ तक? बोलो। 86। 55, 54, 86। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा n = 7। यहाँ पे आएंगे आपके पास 7s, उसके बाद 5f, उसके बाद 6d, उसके बाद 7p। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी। सीजियम के बाद क्या आता है? Francium। और यहाँ पे ऑर्गेनसॉन होता है, ओजी ओ होता है, सेवन। ऑर्गेनसॉन, दैट इज, हाँ। कहाँ से कहाँ? 87 से बोलो, बोलो 87 से। बोलते ही नहीं है बच्चे, बोलो 32 जोड़ो ना इसमें, 32 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 118। चलिए, कॉपी दिस डाउन, रेज योर हैंड वंस यू आर डन। आपके पास एक सवाल आएगा। आ, सर इससे पहले एक, का दिखा सकते हैं। क्या इससे पहले? इस वजह से हम समझा रहे थे ना बस। ये ऑफ एलिमेंट पीरियड इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ns, n-2f, n-1d, np। आपने नहीं लिखा ये? तो बोलो, बोलो, लिखा आपने? अच्छा देख लीजिए, आराम से देख लीजिए।
डन एवरीवन, यस नो, प्लीज टेल मी. Sir, right. लिखे लिखे, रेज योर हैंड वंस यू आर डन. वेटिंग फॉर अबीर एंड अलीना. वेटिंग फॉर अबीर एंड अलीना. चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज याद की थी ना, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 2, 10, 18, 36, 54, 86, है ना. यहाँ से आप शॉर्टकट में पीरियड नंबर निकाल सकते हैं. देखिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86. ठीक है. यानी कि देखिए, अगर आपके पास दो से पहले तो 1 and 2 आर इन द फर्स्ट पीरियड, तो आपको मतलब कोई पूछने वाली बात नहीं है. 2 और 10 के बीच में रहा तो 10 को इंक्लूड करते हुए 2 और 10 के बीच में रहा तो पीरियड नंबर कौन सा, 2. 10 और 18 के बीच में 3. 18 और 36 के बीच में 4. 36 और 1 के बीच में फिफ्थ पीरियड. 54 और 86 के बीच में सिक्स पीरियड. और 86 के बाद सेवन पीरियड, है ना, तो 8 पीरियड है ही नहीं. ठीक है. दो से पहले फर्स्ट पीरियड और 86 के बाद सेवन पीरियड. ठीक है. देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं ना, एलिमेंट बोल रहे हैं, आप पीरियड नंबर बताइए. बात समझ में आई, हाँ या ना बताएं. अली अलीना, आप देखो ना, देखो क्या है, देखो 3 to 10, यानी 2 के बाद 10 के पहले. 2 से 10 तक कहाँ पे रहेगा, पीरियड नंबर 2 में. 10 to 18 पीरियड नंबर 3. ठीक है ना. 10 से 18 के बाद 11 है ना, 11 से 18 क्या हो गया, 10 के बाद आसनदारी है अलीना, अबीर एंड अली. हाँ या ना बोलो. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आई एम गिविंग वन एलिमेंट, है ना. रेडी है सबको, रेडी है, बोलिए रेडी है, जल्दी बोलो. रेडी, यस और नो. Yes, शुड sir. आई गिव यू अ क्वेश्चन. 35 बताओ, 35 पीरियड नंबर. 35 पीरियड नंबर. 35 पीरियड नंबर बोलो. यस सर बोल के चुप हो गए. 35 का पीरियड नंबर नहीं बता पा रहे. बोलो. अरे बोलो, माइक ऑन करके बोलो, अच्छे से बोलो. माइक ऑन Four. रखिए आप लोग, अबीर. हाँ, फोर्थ पीरियड. फिर से माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए, माइक ऑन रखिए. 66 पीरियड नंबर. 66 पीरियड नंबर. सिक्स. चलिए चलिए, और मान लीजिए आपके पास आ गया 28 पीरियड नंबर. 28 पीरियड नंबर. Four. फोर्थ. ठीक है. आपको अगर ये चीजें आ गई, 2, 10, 18, 36, 54, 86, गॉट डिस्कशन ऑफिसर नहीं अप्लाई कर लेंगे, जल्दी जल्दी करने के लिए बोलो. हो जाएगा अप्लाई. तो देर आर Yes. मल्टीपल टूल्स, है ना, आप एक ही चीज करने के अलग अलग तरीके. ठीक है, एक ही चीज करने के अलग अलग तरीके, लाइक बट 2, 10, 18, 36 दिस इज गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट, गोइंग टू बी सो इम्पोर्टेंट. अब उसके बाद आपके पास है ग्रुप नंबर. क्या है आपके पास, ग्रुप नंबर. ग्रुप नंबर से पहले ना हम दो चीजें आपको बस बता देते हैं. बताना क्या है, चलिए ग्रुप नंबर ही स्टार्ट करते हैं. इसी में आपके पास वैलेंसी वगैरह, चलिए हम बता देते हैं वैलेंसी की डेफिनेशन वगैरह. सो दैट एक तो रियल डेफिनेशन आपको पता रहे, और उसके बाद वैलेंसी निकालनी कैसी वो भी आपको पता हो जाए. कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी लिखिएगा, कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी. तो वैलेंसी जो है ना, ये दो में से एक चीज हो सकती है. वैलेंसी विल बी आइदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 - वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है. वॉट एवर इज मिनिमम.
विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल देखो, यू हैव कैल्शियम है ना, यू हैव कैल्शियम, कैल्शियम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 20, यानी कि आपके पास आर्गन 4s2। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? 8 - 2 इट इज इक्वल टू 6। तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंस हो जाएगी सिर्फ 2, है ना, वॉट एवर इज मिनिमम। 6 मिनिमम है या 2 मिनिमम? 2 मिनिमम, वैलेंसी 2। सिमिलरली अगर आपके पास मान लीजिए फॉस्फोरस, फॉस्फोरस विच हैज एटॉमिक नंबर 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नियॉन, एंड यू विल बी हैविंग CS2 3p3, CS2 3p3। नाउ दिस होल 3p इज थर्ड शेल। क्या है आपके पास? द थर्ड शेल इज बैलेंस, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, है ना। 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 8 - 5 इट इज इक्वल टू 3। अब बैलेंसी क्या होगी? 5 होगी या 3 होगी? बैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, क्या होगा? 1s2 2s2 2p4। वैलेंस शेल इज सेकंड शेल, है ना, 2s2p वाला वैलेंस में है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 8 - 6 इट इज इक्वल टू 2। व्हाट इज मिनिमम? 2। ये 2 हो गया। गॉट दिस इक्वेशन ऑफ नहीं? बताइए, बोलो। बस समझ में आ गई है ना? yes अदीर, sir, अलीना एंड अली। ठीक है, बेसिकली वैलेंसी अब ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्या होता है वो आपको आइडिया लग गया एक्चुअली में। उसके बाद फिर हम लोग ना इसको मतलब हाउ कैन वी गेट वैलेंसी क्विकली, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। वैलेंसी गिव्स क्या करता है? वैलेंसी वैलेंसी गिव्स एन आइडिया, वैलेंसी गिव्स एन आइडिया अबाउट कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, combining capacity of an atom. Copy this down, raise your hand once you're done. Raise your hand once you're done. Waiting for Alina and Ali. Alina and Ali waiting for you guys. मूविंग ऑन, अब हम लोगों ने पीरियड देख लिया, अब हम लोग ब्लॉक और ग्रुप का साथ में ही देख लेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली आप देखिएगा, एस ब्लॉक एलिमेंट।
एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। एस ब्लॉक में आपके पास दो ग्रुप होते हैं। इट इज कंपोज ऑफ टू ग्रुप्स। टू ग्रुप्स क्यों? क्योंकि एस सबशेल में आपके पास जो होते हैं दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उन मतलब जैसे वन एस में दो, टू एस में दो, थ्री एस में दो, फोर एस में दो, तो इस तरह से वन पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरह से आपके खींचा चला जाएगा। ठीक है। इट इज कंपोज ऑफ टू ग्रुप एज each S subshell can have two electrons। जो ग्रुप नंबर वन है, ग्रुप वन एलिमेंट, ग्रुप वन एलिमेंट्स को एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना एल्कली मेटल्स, इनकी क्या मतलब है, ठीक है, अभी समझा दे रहे हैं, ऐसे धीरे हर चीज की थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। एल्कली का मतलब होता है दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव व्हेन एडेड टू वाटर। पानी में आप अगर इनको डालिएगा, इफ यू आर गोइंग टू ऐड द एल्कली मेटल्स इन वाटर, देन ये क्या करेंगे, उसको बेसिक कर देंगे ना, उसकी OH कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटल? मेटल का मतलब होता है दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बाकी एलिमेंट्स की बनस्पत इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में। ठीक है, उसी तरह से जैसे ग्रुप टू एलिमेंट्स है, ग्रुप टू एलिमेंट्स दे आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब देखिए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन तो वही हो गया, दे इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव व्हेन एडेड टू वाटर। मेटल्स का मतलब वही हो गया, दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आया अर्थ एक वर्ड, नया वर्ड, दैट इज अर्थ। यहाँ पे इन द ग्रुप टू एलिमेंट्स यू नो दैट मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज प्रेजेंट, एंड मैग्नीशियम कैल्शियम जो है आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, इस वजह से अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन। वेटिंग फॉर अलीना एंड अली। नेक्स्ट है आपके पास, अब आराम से में एक एक ग्रुप को लिखते हैं, ठीक है ना। नंबर वन ग्रुप वन एलिमेंट, देर आर सर्टन थिंग्स ना जो हमको यहाँ से इन ग्रुप वन एलिमेंट we will first of all see some generalizations, okay, and in the generalizations what we will do, once we see the specifics then we are going to generalize it. For example, in group 1 elements what are we having? We are having hydrogen, lithium, sodium,
potassium, rubidium, cesium, and francium. And francium. The atomic number is 1, this is 2, this is 3, this is 11. The atomic number is 19 for rubidium. The atomic number is 37, then 55, then 87. The electronic configuration is going to be 1s1. This will be 1s2, then 2s1. For 11, it is going to be 1s2, 2s2, 2p6, and 3s2. After that, we can, 1s2, 2s2, 2p6 can be also written as what? It can be also written as neon. Neon, 3s. Similarly, 19 it is going to be argon, 4s1. And this sequence will go on argon, but krypton, then we are going to have 5s1 xenon, then we are, and so on. Right? The general electronic configuration is going to be NS1. Because when you are in the period number, if I'm going to talk about the periods, this period number 1, this is period number 2, this is period number 3, this is period number 4, this is period number 5, this is period number 6, 7. Fine. So 1s1. Last subcell. The last valence unit is what? 2s1. 3s1. So whatever the period number is, the general electronic configuration is equal to NS1. So here also you can write NS1. What is N here? N is equal to the period number. By the way, we write general electronic configuration. It means general outer electronic configuration because we're always talking about the outer electronic configuration. The inner shell electrons are not very useful in the bond formation. And in chemistry, we are going to talk about bond formation, reactions, and so on. In the reactions as well as in the bond formation, outer shell electrons they participate. That is why we are going to talk about the outer shell electrons. Right? The valence electron is equal to how much? Valence electron it is equal to 1. The valency will be equal to 1. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. Raise your hand once you're done. And you're going to complete this thing. Right? You're going to complete this thing. Waiting for Ali. Right next. Group number 2. Group second element. This is going to be NH2. A general electronic configuration, as was the case in the first group element, it was NS1. This is going to be NH2. So here we are going to have period.
Here I'm going to write the elements, है ना? So what elements do we have here? We have beryllium, B, magka, strontium, BARA. Okay, Bemaka, turbo. There are few elements that you may not know the name. This is beryllium, magnesium, calcium. This is strontium. Strontium. This is barium, radium, है ना? Strontium may be new for you guys. Barium and radium. Atomic number. This is 4. For magnesium, it is 12. This is 20. Strontium, it is 2038. Then this is 56, and this is 88. Atomic electronic configuration is going to be 1s2 and 2s2. But since it is in 2s2, this will be period number 2. Magnesium is going to be neon and 3s2. And for calcium, it is going to be argon 4s2. And so on. This is going to continue. Fine. Argon ke baad, you are going to have K, Niaz, Array, Karo. Karo is going to be krypton, xenon, radon, and so on. Fine. Now, general electronic configuration, it is going to be ns2 for this case. N, it is equal to the period number, as was the case in the group 1 also. Then we are going to have about the valence electron. The valence electron is going to be equal to 2, and the valency is going to be equal to also 2. Raise your hand once you're done. This is period 2, this is period 3, 4, 5, 6, 7. Raise your hand once you're done. All of you done. Next, we are going to talk about the P block elements. So in P block elements, the general electronic configuration is always going to be NS2, which is already going to be filled, and we are going to fill the electron. For S block elements, if I talk about the general electronic configuration of S block elements, in S block elements, we fill the N S subshell, and in S, we are going to have either 1 or 2 electrons. In general, what do we write? NS 1 to 2. Similarly, for P block elements, we can write NS2 will be always present. We are going to fill the electron from NP1 to 6. NP1 to 6. Okay, we are going to write it is composed of six groups as the P subshell, as each P subshell can hold 6 electrons. है ना? उसमें कितने होंगे? उसके पास 6 electrons. Now, this is from group number 13. Now, 13 can also be written as 3A sometimes or 3A like this. 2, group number 13. And then we are going to have from group 13 to 18 होता है ना? Group 13 to 18. 18. Now, 18 can also be written as 0 group. ठीक है? 0 group. 18 को 0 group बोला जाता है. It is going to be 7A. This is very old nomenclature, 7A. Task nomenclature बोलते हैं इसको. Chemical abstract system. That is very old. Group 13 to 18 is the new IUPAC system. Okay? Group 13 to group 13 to PA. Now, write a few notes.
जो आपके पास इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, द पी ब्लॉक एलिमेंट इट कंटेन्स थ्री टाइप ऑफ सेल्स. इट कंटेन्स metals, metalloid, and non-metals. ठीक है, उल्टा सीक्वेंस हो गया थोड़ा. Initially you will have non-metals, then बीच में you will have metalloid in the center of the any group, and then you are going to have non-metals. So basically the sequence like this. You will have non-metal, below that you will have metalloid, and below that you will have metal. If you remember the metalloid, then you can classify which of the following is metal in each group, and which of them is not a metal. It is non-metal. Right. So elements above, metalloid are non-metals, and below are metals. Below we are going to have metals. What are the metalloids? Metalloid is going to be boron, silicon, germanium, boron, silicon, germanium, and then you are going to have arsenic, antimony, tellurium, and polonium. Now, tellurium and polonium are sometimes not mentioned as metalloids. NCERT has not mentioned this metalloid. NCERT has mentioned polonium as well as aspartame. Polonium and aspartame. Okay. Now, please have a like this in the boron, because boron it has not been considered as a metalloid in NCERT, na? Although it is a metalloid, right? But it is not going to help us in identifying the metals because boron is the first element. All of these are metalloids. Above it, we are going to have non-metals. Below it, we are going to have metals. Okay. So for P block element, I'm going to write a few. But I'm going to write for the group 13, and then 14, 15, 16, 17, you're going to write on your own. Right. So no need to leave pages for that. First of all, write number one. That is group 13 elements. These are known as boron family. This group is also known as boron family. Boron family, we are going to have boron, mangan, alu, gallium, gajar, indium, and thallium. Okay. So this is gallium, this is indium, this is thallium. Okay. Atomic number is 5, 13, 31, 49, and 81. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. This one is neon, 3s2, 3p1. Then we are going to have this one is argon. Then you start with 4s, 4s2, 3d10, 4p2, 4p1. Okay, and so on. Okay. You can fill this now 5s2, 5d10, and then 5p1. Then you are going to have 6f, then you are going to have 4f, then we are going to have 5d and 4. We are going to write the electronic configuration for these. If you look at the general electronic configuration, outer electronic configuration, it is going to be what? NS2 always, and NP is 1.
NP1 NP1 NP1. ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन is going to be 3 and valency is also going to be 3. But as the valence electron will become 5, valency will become again 3, है ना? Valency is again going to become 3. The homework will be similarly complete the P block elements. Similarly complete the P block elements. Waiting for Abir, Alina, and Ali. You guys can do this ना? Yes or no? Alina, Abir, and Ali. हो जाएगा हाँ या ना बताएं? Tell me. हम्म, हाँ सर। है ना? Okay. Just waiting for Ali. There are a few points that we can rather write. For example, group 13 is known as boron family, है ना? After that, what we are going to have? We are going to have carbon family. Group 14 is aka also known as carbon family. It doesn't have any specific name. Group 15 is aka also known as nitrogen. निक्टोजेंस क्या होता है या फिर निकोजेंस होता है? ठीक है, समथिंग लाइक दिस. NiCTO और इट इज PCO. ठीक है, निक्टोजेंस. Similarly, we have group 16 is aka. Group 16 में कौन है? Group 16 is going to be chalcogens, है ना? Chalcogens की oxygen family is known as chalcogen. Chalcogen. Group 16, group 17 is aka halogen. Group 18 is aka noble gases. Inert gases या zero group. This is the only group. This is the only group which has all elements in gaseous form. Okay, all the elements in the group, zero group, or the noble gases or group 18, it is what? All of them are in gaseous form. There is no other group which is having all the elements in the gaseous form. Raise your hand once you're done.
Waiting for Abir and Ali. अच्छा, we can write one more point. Helium has configuration of 1s2, that is last electron enters the s subshell, but helium belongs to helium belongs to 18th group, that is p block. Now, even though the last electron is entering the s subshell, but we keep helium in what, in the p block with 18 group elements, because the it shows, I mean, it is a noble gas and it doesn't react and it shows similar properties as that of the different noble gases. Even though the electron is entering in the s subshell, so by strict definition, this should be present with the group 2 elements in the s block, but it is having more similar properties as that of the noble gases. That way, it is kept in the 18th group in the p block. So, which of, if they ask now which element it has, uh, which element, in which element the electron enters in the s subshell at last, but it is in the p block element, that is only one, that is the helium atom. Okay, write this statement also. Waiting for Abir and Ali. Okay, next we are going to write about the d block elements. In d block elements, write a few things. General electronic configuration. General electronic configuration is going to be ns 1 to 2 and n minus 1 p 1 to 10. For example, copper 29, which has argon 4s1 and 3d10. Okay, so 4s can be 1, it can be 2 also. For example, in manganese, atomic number is 25, argon 4s2, 3d5. So D will be always what? D will be always, you can say that it will be from 1 to 10 and NS will be either 1 or 2. So these are called, these lie between, the D block lie between S and P block and is called, and is called transition elements. And it's called transition elements. Next, the D block, the D block has 3 series. 3 series होते हैं इसमें, depending on which of the D subshell is getting filled. If we are filling the electrons in the D subshell, for example, then we call in 3D, it is known as 3D series. ठीक है, तो 3D series की अगर हम बात करें, then in 3D series, the general electronic configuration, it is going to be 4s 1 to 2 and 3D will be having 1 to 10 electrons. From candium, atomic number is 21 to zinc, atomic number is 30. All of these elements, they belong to what? All of these elements, they belong to the 3D series. Similarly, second is आपके पास 4D series.
In this, the electrons will go to 5s, 1 to 2, and 4d. Since we are filling the elements in the 4d series, it will be 1 to 10, and the elements from this is going to be yttrium, which has atomic number 39. 2. After zinc, we have cadmium. Cadmium has atomic number of 48. Right? Now, from here, you are going to have some differences. Third is 5d series. 5d series is going to have what? Is going to have 6s, 1 to 2 electrons, and it is also going to have 5d, 1 to 10. Now, in between, you will also have the 4f electrons. Right? That is why, first of all, lanthanum, which is going to start. Lanthanum, that is having an atomic number of 57. 2. After lanthanum, we have to skip 14 elements and then again start with hafnium. That is 72 to ZnCdHg, zinc. And cadmium, Hg is mercury. Hg it is going to have the atomic number of 80. Right? So this is the configuration energy. After that, we are going to have the fourth. By the way, CD series, it is aka first transition series. The first transition series. I hope you can complete this. Similarly, this is also known as second transition series. This is aka third transition series. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Raise your hand once more done. All of you done? Now we can write some properties of the D block elements. Number one, high melting point and boiling point, except mercury. Okay. Mercury is liquid at room temperature. It is liquid at room temperature. So, Hmm. so in the periodic table, it's like mentioned is solid What is solid? mercury. Mercury. Tell me, is it solid? In the periodic table, it's mentioned like that. You tell me, na. Is it solid? So it's like solid below room temperature. Keep your mic on. Mercury, you may not have seen, but there is a thermometer of mercury also. Have you ever used that? No. Yes. So it is liquid. That is why it rises. When you check your fever in a mercury thermometer, then why the thermometer? I mean, why mercury rises? It rises because of heat. I mean, it is liquid. Where it is written, it is solid. Alina, I'm searching for its written. you are searching. You are saying, no, it is written in the periodic table. Which periodic table? Whose periodic table? Who has published that periodic table? Second, in the D block elements, they form
colored compounds. And third, they show variable operator state. And this is used as catalyst. G. Alina, did you get that? Which periodic table? Hmm? Alina is not saying anything. Yes, Alina, what happened? Hmm. Tell it. Hopefully, all of you are done. Please write next. F block elements. General electronic configuration is going to be NS2 and N minus 2 F1 to 14. And sometimes the N minus 1 D substrate is also filled from 0 to 2. Now, 0 or 2 electrons are filled in the N minus 1 D substrate. Obviously, this happens when you have some exceptional electronic configurations only. Alina. Okay, fine, Alina. Write this down, Alina. Let me know once you're done. Sedum. Did you get where is mercury solid at room temperature? No, sir, I didn't find it. But I saw it, I remember. But how can it be, I mean, solid? It is liquid only. But which periodic table? In NCERT? So that Hmm? only I can't recall where I found. Somewhere it was written. Okay, okay, fine. Maybe editing was wrong. Maybe you read it wrong. Huh? Maybe it No, was so written like I MG. reread it like 3 times because I was sure it mercury is liquid, so I reread it 3 times. First time you are again trying. F block, they are always in the bottom F, in the bottom of the periodic table, right? When you have the complete periodic table, and separately we have the F block elements, fine. So you can write place at the bottom of place at the bottom of periodic table. Now, it is composed of two rows. Number one is lanthanide, or it is also known as lanthanide. Lanthanide series, fine. This is AKA
Uh, okay, I have to write one more point for F block. F. A rare earth element. And in this we have from cerium, that is atomic number 58, to lutetium, that is atomic number 71. इसका एक और नाम होता है AKA फर्स्ट inner transition series. Second one is actinide or actinoid, or we can call it actinide. And usually these are radioactive. And this is known as second inner transition series. Second inner transition series. इसमें आपके पास एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक होंगे? This will be from thorium, that is 90, and lawrencium, that is 103. By the way, S block elements are also known as inner transition elements. इनको inner transition elements भी कहा जाता है. इसमें लिखेगा elements after uranium are called transuranium elements. Uranium has a number of 92. F block elements exhibit properties similar to that of D block elements. Raise your hand once you're done. Waiting for Alina.
नेक्स्ट देखिएगा periodicity in properties. Right here. What is the meaning of periodicity in properties? Repetition of similar properties after certain regular intervals is called periodicity in properties. Next is cause of periodicity. Cause of periodicity. Why do we see periodicity? Because of similar outer electronic configuration. Similar outer electronic configuration coming at regular intervals or elements with similar properties occur at लिखिएगा here. First of all, helium, hydrogen, helium. Then lithium will be again like that of what? Again like that of hydrogen. Then lithium के बाद sodium आएगा. In between lithium and sodium, how many elements? 8 elements. Between lithium and sodium, how many? 8 elements. Again, from between sodium and potassium, how many elements? 18. From potassium to rubidium, how many elements? 18. From rubidium to cesium, 18. So these are the regular interval after which we are going to get elements with similar properties. First of all, after every two elements, after every 8, 8, then 18, 18, then 30.